Now, so the age you are going with is the age of adolescence, है ना? You were infants, then you went to the childhood stage, and now you are at the adolescent stage, है ना? So, bete, what is actually the adolescent stage and how this reaches? It reaches slowly and slowly by the different stages. ठीक है? हम पहले छोटे बच्चे से होते हैं, that is infancy stage पे होते हैं, then we go towards the childhood stage, and then you go towards the adolescent stage, and then your parents, that is adulthood. ठीक है? So what is first infancy? Infancy stage is from the birth to 2 years. Okay, it is birth still. Sorry, problem. Okay, then come bete after infancy stage, then come there is childhood stage. This is from 2, and come this is from 2 to 11 years. कभी कभी 11 से कम होती है, 11 से पहले ही आपकी adolescent stage start हो जाती है some nowadays. ठीक है? So when there is a maturity and when there is a growth, then the stage is known as adolescence, and it starts with the age of 11 year, and it continues to the 18 years. Sarthak and control. Yes, it is known as teenager age also. Yes, you're right. ठीक है मैम? हाँ, yes, है ना? तो it is also known as teenagers. You are known as teenagers as you think you are mature enough to take the decision, but yet you are between the adulthood and childhood. So you are not probably totally independent. You are independent in certain decisions. Okay. Let me. So the age from 11 to 18 is known as adolescence. Okay. So what does actually the adolescence means? Huh? This is the period of life. You are in this period of life only, bete, where you see there are certain changes. There are changes in your behavior. There is changes in the body pattern. Okay? And there is a reproductive maturity. That is adolescence. Okay? So we can say adolescence is a period of life. It is life. It is a part of life which everyone goes through. ये नहीं है कि special एक ही होता है, where everyone, every person in this world, every human being has to go through. ठीक है? So this is the age where there are certain change which will make you to go to the adulthood stage. ठीक है? The changes are in your body, है ना? When the body gets changed, like we'll do further also. Changes, your emotion change, your way of thinking will change. Okay? So these changes leads to reproductive maturity. Okay? So this is called adolescence. And when you are in this period of life, then you are known as adolescent. Okay? This is known as adolescent. Both the boys and the girls are in this stage now, है ना? So you will better understand and take it like a science we are doing. So now come the next topic, that is puberty. Okay? Now, what is puberty? Puberty, the age when your
6 hormone and 6 gamete begin to produce. Okay, and the boy or a girl both are become sexually mature to reproduce. You can write the age at which the sex hormones के साथ sex gametes, these are sperms and ovum, you have done already, and sex gametes, these are produced, ठीक है, produced both in male and female. Okay, and we all are aware, we have done that when the 6 gametes are, you have done already the reproduction chapter, when the 6 gametes and 6 hormones are produced, they become sexually mature. They become sexually mature to reproduce. Okay, so we all are aware about the male gamete is sperm and the hormone which is released is testosterone. Okay, and the female gamete is your ova, and the hormone which it will release is estrogen and progesterone. You can write bete the gametes, male gametes, these are known as sperms, and the hormone which is released is testosterone. Okay, the hormone which is produced is testosterone. Okay, and in the female, जो female hormone है, female gamete है, that we know that plural is ova and singular is ova, and the hormone are estrogen and progesterone. So these are the two hormones released when there is a puberty. Puberty when there is several changes in your body. Okay? The main change is that the age where sex hormone or sex gametes are released, and these gametes in case of male child is known as sperm, and the hormone which is released is testosterone, and in the female child these are the ovary which start producing the ovum or ova, and the hormones that is released is estrogen and progesterone. Now, what are the changes that we see at the puberty and adolescence? Okay, which leads to become adolescent? What are the various changes? Let us start the first change, that is change in increase in height. Okay, the changes in the puberty is first is better increases height. Mostly the height increase at this stage, and you know the girls' height increased more than as compared to boys. Okay, at this stage, when the stage start 10 to 11 or 9, the girls की height ज़्यादा increase करती है, boys की जो height है बेटे later on ज़्यादा increase करती है, ठीक है? So write down the changes बेटे. Changes during puberty and adolescence. The first is increase in height.
So this is merely discussing, and let us discuss this first. Part is coming now. Okay. ठीक है. So increase in height. So we all know whenever there is better puberty, there is increase in height of both girls and boys. Whenever there will be increase in height, the increase in height, why there is increase in height? There is increase in length of the bones of arms and legs, okay? And your internal organs to grow, okay? So there is increase in length of bones of arm and legs and internal organs to grow. ठीक है? Okay, and you can write अपनी लाइन बना लेना. They increase in height जो भी in boys and girls both हैं. ठीक है? अब हमें पता है बेटे कि सब में एक जैसी, you are studying in 8th standard and all of the student doesn't have same height. ठीक है? कईयों की हाइट बहुत ज्यादा होती है, कईयों की बहुत कम होती है. We can say that increase in height जो है वो individual to individual वेरी करती है. ठीक है? कईयों की बहुत जल्दी इंक्रीज, जैसे ही दे रीच और बिफोर द प्यूबर्टी दे स्टार्ट इंक्रीजिंग सडनली, और कईयों की बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करती है. ठीक है? और कई तो बहुत लंबे हो जाते हैं, है ना, और कई बहुत छोटे रह जाते हैं. ये जरूरी नहीं है. द एज लाइज बिटवीन, बेटे वी हैव डन 11 to 18. कई तो स्टार्टिंग में 11, 12, 13 में ही ग्रो करना शुरू करेंगे, कईयों की 18 तक हो जाएगी. और जो गर्ल्स हैं वो स्टार्टिंग में दे ग्रो फास्टर देन द बॉयज. बॉयज पहले स्लोली कई ग्रो करते हैं, मगर जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट जल्दी आ जाती है. अब ये जो हाइट का आना है वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी है. यस. डाइट एंड न्यूट्रिशन. यस. Parents' height, diet, nutrition, yes, that is heredity. Yes, you are all are writing right one. So it depend upon the height of your parents. Like if your parents are tall, it is probable that you will also become tall. It is probable, not definite, कि हाँ ये हो सकता है. अगर मदर फादर दोनों टॉल है तो पेरेंट जो बच्चा है वो हमेशा टॉल हमेशा नहीं होगा. ये डिपेंड करेगा बेटे जीन्स को. ठीक है? जीन्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती हैं, कलर की या हाइट की, इवन आई कलर, इवन some kind of their hereditary diseases also. So it depend upon the heredity. I got the answer from so many students. ठीक है? सो बेटे जीन्स हैं, वी हैव डन. डीएनए है, डीएनए कैरी जीन्स, डीएनए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाते हैं एंड दस दे बिकम द वे द पेरेंट्स आर. तो कईयों के तो जीन्स बहुत ट्रांसफर होते हैं. वी हैव सीन इन द टीवीज ऑल्सो, कुछ एक्टर्स की जो बेटों की जो फेस है वो बिल्कुल सेम होता है. किसी की हम ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स से फेस मिलता है हमारा. ठीक है? In the same way, the height also depend upon the parent. उसके बाद yes जयंत, wait, yes. मैम एक हार्मोन्स की डिजीज होती है ना मैम, जिससे हाइट अनयूजुअली मैम बड़ी हो जाती है ज्यादा. हाँ, that मैम will. जैसे ग्रेड खा लिया तो उसकी हाइट लंबी है मैम. हाँ होती है बेटे. हार्मोनल चेंज आने के कारण इस स्टेज में बहुत कुछ फर्क पड़ता है. तो कईयों का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है. ठीक है? ये हार्मोन्स की वजह से होता है. नॉट ओनली इन इनहेरिटेंस, कभी कभी पेरेंट्स की हाइट इतनी नहीं होती बट दे गिव गुड डाइट एंड न्यूट्रिशन चाइल्ड, तब भी हाइट बढ़ जाती है. बहुत फैक्टर्स होते हैं बेटे. कईयों की घरों में इतना नहीं है फिर भी उनके बच्चों की इतनी हाइट होती है. तो डिपेंड है कि क्या है. ठीक है? वी कांट से
हार्मोनल चेंज हो रही है या या इनहेरिटेंस हो रहा है या न्यूट्रिशन हो रही है, तो यू कैन राइट द डिफरेंट पॉइंट्स. तो फर्स्ट इज यू कैन राइट द फैक्टर अफेक्टिंग में क्या आ जाएगा. फर्स्ट इज इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड डाइट. आपको पता है इस एज में आपको बोला जाता है बेटे प्रोटीनिशियस डाइट लो ज्यादा, है ना. फूड जो प्रोटीन, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, अब जो अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो जिम्स वगैरह में जा रहे हैं, वो भी प्रोटीन डाइट. तो उनकी जो प्रोटीन की डाइट है ना, उनकी हाइट नहीं लंबी करती, उनको एनर्जी दे के उनके मसल्स बनाती है. तो दे यूज टू टेक दैट प्रोटीन. जो आपकी एज के बच्चे हैं, अगर अभी प्रोटीन डाइट लोगे तो वो प्रोटीन डाइट आपकी हाइट इंक्रीज करने में, क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग एज है. तो मम्मा आपको बाई बाई कहते होंगे ईट पल्सेस, दालें खाओ, राजमा चने खाओ, आपके लिए अच्छे हैं. और आप दाल के लिए तो आप नाक मुंह चढ़ा देते हो. दाल बनी है, हाँ चने बने तो इट्स ओके, है ना. तो दाल वगैरह आपको अच्छी लगती है, बट खाया करो बेटे, इट हैज प्रोटीन. यस, कैथ इज राइटिंग ब्रोकली. यस, हाँ ग्रीन वेजिटेबल ब्रोकली भी अच्छी है. तो यू शुड ईट पल्सेस, है ना. यू ईट्स ग्राम्स एंड ऑल, कि आपकी प्रोटीन डाइट अच्छी हो. यू सोया आप खा सकते हो, सोया इज रिच इन प्रोटीन. सोया चाप खाते हो, बड़ी टेस्टी लगती है. सोया चंक्स भी आते हैं, तो यू कैन ईट दैट ऑल्सो, है ना. तो योर हाइट कैन बी अफेक्टेड बाय इनहेरिटेंस, दैट इज जीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, and also the diet. If you take the food rich in protein, probability your height will be increase much. ठीक है. तो अभी एज है, खाया करो प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन लिया करो कि आपकी हाइट बहुत बढ़े. क्योंकि इसके बाद तो आप अगर प्रोटीन खाओगे ना, तो आपकी ज्यादा मसल्स ही बनेगी, वो भी एक्सरसाइज करोगे तो. ठीक है. अब अगर आप प्रोटीन खा लोगे तो आपका सब कुछ बॉडी मेजरमेंट जो है वो अच्छी हो जाएगी. ठीक है. So one is inheritance and other one is nutrition. Inheritance means the genes which get inherited from the parents. And what is nutrition? The kind of diet you have taken. If you will take proteinous diet, obviously there will be growth in the body and it will be increase in height. Okay. So this is the first weightage, that is increase in height. Now there is an activity and the activity result, उन्होंने different activity में क्या किया है, they have taken a growth rate और एक ग्राफ बना है कि बॉयज इस एज में कितनों की फुल हाइट हो जाती है. I'll just share the graph with you and we'll try to do a numerical from that. Okay, I am just sharing the graph with you. And then we will do the numerical. उसमें से numerical आएगा पेपर में. Okay. The graph is visible to everyone. Yes. The values are visible. ठीक है. तो these values are obtained by the result कि उन्होंने देखा कि एवरेज हाइट जितनी होनी चाहिए 8 इयर्स के बॉयज में से 72% की उतनी हाइट हो जाती है. अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 77% गर्ल्स की उतनी हाइट हो जाती है जितनी दे थिंक दैट थ्योरेटिकली होनी चाहिए. ओके. जितनी बेटे, आई कांट रीड द चैट नाउ, अभी स्क्रीन इज शेयर विद यू. वेट. हाँ, यस, ओके. ठीक है. 9 इयर्स में जो 75% ऑफ बॉयज हैं, जितनी थ्योरेटिकल हम सोचते हैं हाइट होनी चाहिए उतनी अटेन कर लेते हैं, और 81% ऑफ गर्ल्स अटेन कर लेती हैं. 10 इयर्स में 78% बॉयज हैं तो 84% गर्ल्स हैं. ऐसे बेटे ये वैल्यूज गिवन है आप. ठीक है. तो इन्होंने एवरेज रेट ग्रोथ इन द हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू एज आपको दिखाई है. अब इस के हेल्प से, इन वैल्यू की हेल्प से आप ऑब्टेन कर सकते हो कि जब वो बड़ा होगा तो उसकी हाइट अटेन कर लेगी कि नहीं करने, कितने चांसेस हैं उसको कितना बड़ा होने के लिए. ओके. तो आप जस्ट राइट डाउन द न्यूमेरिकल.
A girl is 13-year-old and 172 centimeter tall. Her probable height, या calculate her full height at the end of her growth period. Calculate her full height at the end of the growth period. So write down the first derivative formula of how to find the full height. So we have to find out, calculate her full height. ठीक है, तो full height can be calculated by the formula that is present length. ठीक है, जो अभी लेंथ था उसकी, okay, percentage of full height at the age. ठीक है, at this age into 100. अब बेटे इस न्यूमेरिकल में आपको 13-year-old है, आपको जो प्रेजेंट हाइट है वो 152 गिवन है. ठीक है, प्रेजेंट हाइट 152 गिवन है. ठीक है, अब जरा आप चार्ट में चेक करो, आपके चार्ट में आपको हाइट 13 ईयर की कितनी गर्ल की है, 95. जैसी देखो जो चार्ट शेयर्ड है उसमें 13 ईयर की एज की गर्ल की जो परसेंटेज है वो 95 है. जैसी लेट मी डू द एनोटेशन. वैसे आपको बेटे वैल्यूज गिवन होगी एग्जाम में, इफ ऐसा न्यूमेरिकल आता है. देखो ये 95 फॉर 13-year-old गर्ल. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगे 95 into 100. तो ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी की भी पूछी जा सकती है. तो क्या आंसर आया आपका, जल्दी बताओ मुझे. तो एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे ऐसा. यस, प्लीज रिपीट बेटे, मैंने रिपीट किया काफी बारी. A girl is 13-year-old and 152 centimeter tall. ठीक है, तो फॉर्मूला इज गिवन. So what is the answer? I am just opening chat box, bete. Keeping the chat box away. Yes. So 152 divided by 95 into 100. तो क्या आंसर आ रहा है आपका? 160. तो ऐसे ही अगर मैं यही आपको 150 दे दूं, है ना, अब बॉय की पूछें तो क्या आंसर आएगा बताओ. हाँ, अब जैसे कि हमने 152 सेंटीमीटर टॉल बॉय को बोल दिया बेटे, और 13 ईयर का बॉय है, तो आई एम अगेन शेयरिंग द स्क्रीन. अरे दैट इज रिपीट. तो आप लिख लो 13-year-old बॉय की क्या है, 88% है. ठीक है, तो 88% है. 95 गर्ल की है तो 88%. अगर 152 है तो डिवाइडेड बाय 88 अब करोगे इनटू 100. अगर गर्ल पूछी गई है तो हमने डिवाइडेड बाय 95 किया, क्योंकि 13 ईयर की एज की जो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट है वो 95 है. अगर बॉय की है तो इट इज 88.
अब आप 88 से डिवाइड करोगे, पहले आपने किससे किया था बेटे? 95 से किया था। अब क्या आंसर आया हरी? अब जब बड़ा होगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जानी। बताओ हरी। अब प्रीवियस का आंसर 160 आपने बताया, अब इसका आंसर क्या है हरी? अब जल्दी बोलो। हरी अप, हरी अप, हरी अप। ज्यादा हो जाएगी। 172. Tanish is saying 172. चार्ट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, तो बेटे ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाएगा तो यू कैन डू नाउ। यस, chart will be provided to you, just you have to see the age and then the height given to you and what is the percentage of full height. Yes Rhythm. मैम जो ये चार्ट है ये ऑलवेज ट्रू होता है? नहीं बेटे, इट्स नॉट ऑलवेज, दिस इज प्रोबेबल कि इतनी हो सकती है। नथिंग इज ट्रू। बच्चा अगर कोई अच्छी डाइट ले लेगा और अपना लटकना शुरू कर देगा, अपने आप को चाहेगा कि मेरी हाइट बढ़ जाए, तो हाइट उसकी बढ़ भी जाती है। ये प्रोबेबल है कि अगर अभी उसकी इतनी है तो बड़े होके कितनी होगी। तो उससे पहले ही अगर आप डाइट अच्छी कर दोगे अपनी और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लोगे तो हाइट बढ़ भी सकती है। ठीक है, गॉट इट? चले आगे। चलो, तो आफ्टर इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ चेंज इन बॉडी शेप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप। So there is a change in the body shape of both boys and girls. In the case of boys, shoulders get broader. ठीक है, shoulders get broader and chest become wider. ब्रॉड हो जाते हैं और जो चेस्ट है बेटे वाइड हो जाती है। एंड दे हैव मोर मसल्स ऑल्सो, दे हैव मोर मसल्स एज कंपेयर टू गर्ल्स, है ना। तो ये सारी जो है वो बॉयज में बॉडी चेंजेस आते हैं। ठीक है, एंड अब गर्ल्स में क्या चेंजेस आती हैं? इन द गर्ल्स gain weight